Okay. Good evening everybody. आज आमे आरंभ करिबा मा चैप्टर जोटा कि होची स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन रो डेफिनेशन आगे पढला. व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन? सो एटा बहुत इजी चैप्टर टा and basics of coordinate geometry. Okay. So आमे आरंभ करिबा व्हाट इज a straight line. It is defined as the locus. Locus समस्या जानछंती. Locus माने is a equation of a point through which we can make a curve. हैला. Locus of a point such that any 2 points of this locus have a constant inclination. Inclination is also known as gradient. What is inclination? If a straight line intersects the x-axis at the inclination of the line is defined as the measure of the smallest non-negative angle which the line makes with the positive x direction. माने ए फिगर रे ए जगह रे हमारा inclination theta रहबो. एटा x-axis how smallest positive. Okay, so this is known as inclination. Slope or gradient. If the inclination of line is theta and theta is not equal to pi by 2, then the slope of a line is defined as tan theta and it is denoted by m. This inclination is also known as the slope of the line, and we can get the slope of the line by tan theta. Slope of x-axis is 0. Theta inclination 0 रहेगा, है ना? And slope of y-axis is not defined. Tan theta, when theta is pi by 2, then tan theta does not exist. Hello. Next हमें पढ़ेगा slope विषय. What is a slope? Let p x1 comma y1 and q x2 comma y2 be 2 points on a line. Then the slope will be y2 minus y1 by x2 minus x1. कारण हमको tan theta बाहर करनी है. Tan theta कौन था? Tan theta था perpendicular upon base. Hello. So we can say the line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2 is x y1 x1. A equation को solve करने हमको y is equals to mx plus c आसे. Hello. Note the above matrix is a condition for 3 points to be collinear. यदि ए जगह हमें x1 x2 x3 पकड़, फॉर एग्जांपल देखो, यदि ए जगह रे हमें this is x1 x y2 y1 then x2 y2 83 3 यदि एटा में पकेलु ताले यदि इक्वल टू 0 आसुची then all the 3 point is collinear. हेलो, आगे भी हमें पढ़िबा आउरी भी कंडीशन अछि कोलिनियरिटी रो कोन था सेटा हमें देखिबा. इक्वेशन ऑफ अ मीडियन थ्रू a x1 y1 is माने x1 y1 इटी अछि तार हमें मीडियन केमति बाहर करियो. मीडियन माने तार इंटरसेक्शन मीडियन देखो इटी अछि मीडियन. This is the figure, hello, where m is median. Okay, median माने 80 ratio 1 रहेगा, 80 ratio 1 equally divided. Then the equation will be x y. एटा important हमारा equation. So हमको एटा माने रखिया माने को भी गोटे हमको पॉइंट दे देले सेठू मीडियन कितनी बात करिवो. So this is the equation. Then the equation of internal and external bisector of A. A 80 point अच्छी. This is A. This is A. Then तारा internal bisector गुटे रहेबो, गुटे external bisector रहेबो. हमें तारा equation केमती बात करते देखो. तारा equation हमें A formula बाहर करें. है ना? Mostly question direct पहुंचारन देनी. तो आगे जितना मैं angle between two line बाहर करी, then हमारी हमको easily क्या होना? है ना? So next equation of a line. Line रो हम पाके total short proper equation अच्छी. First was the point slope form, very easy, which is also known as like
the equation of basic equation of line माने दीटा पॉइंट दिया है सेठू तमे स्लोप बाहर कर आगे स्लोप रा हमें फार्मूला जानथिलो m is equals to y minus y1 upon x minus x1 तापर हमें जानथियो इक्वेशन ऑफ लाइन काढो y is equals to mx plus c ताले m ता जागारे पकाय देले हमें इठी देखो ताले हमें क्वेश्चन पाइ जिबा তাহলে আমি m is equals to y minus y1 upon x minus x1 আছে তাকে আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করব তাহলে আমার কোন হবে y minus y1 y y minus y1 is equals to m x minus x1 এটি y1 জায়গায় y0 দিয়েছি just a representation this equation is known as the slope point of a line hello then हम पाखे कौन अच्छी next अच्छी 2 point form तो दीटा पॉइंट दिया you have 2 point এটা কোন থিলা এটা খালি গোটে পয়েন্ট থিলা আর স্লোপ দিয়া থিলা which is m दिया है you have m and you have y0 and x0 then you have 2 points দুইটা পয়েন্ট আছে দুইটা পয়েন্ট কেটে বার করব দুইটা পয়েন্ট আছে তাহলে স্লোপ বার করে পারবে দুইটা পয়েন্ট ভিতরে easy which is slope is y2 minus y1 upon x2 plus x1 is equals to m which is slope how would I slope bar करबा with x comma y जोटा कि वेरिएबल अछि x comma y रा कोन x minus y1 upon y minus y1 upon x minus x1 is equals to also equal to m এটা ইকুয়েশন को हम इक्वेट कर देबा তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটা পড়াইছে স্লোপ পয়েন্ট 2 পয়েন্ট ফর্ম রে আমরা স্লোপ রেখা হলা তাহলে this is the is also equal to m which is slope this is known as the 2 point form of a line then slope intercept form is also equal to the 2 point intercept মানে দুইটা 2 point form ও point slope form যদি নিচে যাব slope intercept form এ দেখো slope intercept what do you mean by intercept মানে the points where the line cuts the x-axis and y-axis are known as intercepts okay तो हमको intercept दिया है intercept कितनी दिया है intercept हमको दिया है 0,6 और d এটা y-axis रा intercept এটা x-axis रा intercept so just normal हमें पका देगा हमको जोड़ा अछि slope m जोड़ा अछि ताले m is equals to 0 minus d upon c minus 0 which is minus d by 0 hello this is sorry minus c by d so which will also be equal to m ताले just हमें से हमको खाली स्लोप और इक्वेशन मालूम रखना है सेटा हमें को भी फॉर्म बाहर करते हैं देखो so हमको इटो एटा मिलेगा case 2 if the slope makes x intercept just the slope intercept is not nothing but an extension of point slope form and intercept form is nothing but extension of 2 point form है ना intercept form माने तुमको खाली थीटा intercept दिया है सेटो स्लोप बाहर कर दबो स्लोप बाहर करके गोटे पॉइंट नहीं जीवा सेटो आ गोटे स्लोप बाहर कर दबो इक्वल टू m रहबो इक्वेट कर दबो जस्ट ए दुटा इक्वेशन यदि मन रहेगा these two equations we easily make normal form this is something which is tricky ठीक है हमको concept clear कर if p is perpendicular distance from the origin to the line AB p is perpendicular distance from the origin to line AB this is okay and makes an angle alpha with x-axis t जोड़ा बोलो x-axis रो alpha angle okay so the equation of the line is x cos a alpha plus y sin alpha is equals to p so our equation of line will be like this where p is nothing but the point okay so এটা আমরা মার্ক कर देगा important
This is important. This is the normal form. When you have given an angle, then you have to take normal form. Hello. So x cos A plus y sin alpha is equals to E. This is the normal form of the line. Okay, then parametric form. Parametric form में हमें जानते हैं parameter हमें केमती decide करूँ. Parameter हमें उठे decide करूँ r cos theta out r sin theta. So the equation of the line passing through x1, y1 and making an angle theta with the positive x-axis is given as and के नाम है जाने चाहिए देखो slope कौन था tan theta था. So y minus y1 upon x minus x1 will be equal to tan theta. Tan theta को मैं कौन करूँ r and then also sin theta by cos theta is also equal to tan theta. So 8 में मैं theta coordinate कितनी बार कर लूँ. This is the equation. Okay, this is the parametric equation. And this is the coordinate of any point at distance r from the r of the line. So, এটা কত পারিও this. Okay, this is also important, and this is the parametric equation. So mainly तुमको एक पेज में कितना चारिटा फॉर्मूला बस में 4 formula. Okay, this is the number 1. This is the number 2, and this equation is number 3. And this is number 4. তাহলে আমরা এদিকে বসে আছি ইকুয়েশন অফ লাইন আর এই যে স্লোপ ইন্টারসেপ্ট ফর্ম আছে আর ইন্টারসেপ্ট ফর্ম আছে. These are nothing but the extension of this, and this is the extension of this. So এটি ইন্টারসেপ্ট করলে তাহলে যেটা অ্যাঙ্গেল বানবে ওতে থিটা ওতে phi will be 180 minus theta. ହେଲା. So এই অ্যাঙ্গেল এই লাইনର ଗୋଟେ স্লোপ ଥିବ which is m1, এই লাইନର ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପ ଥିବ which is m2. ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ tan theta ବାହାର କରିବୁ that will be equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. এটা কোনটো আসলা tan theta 1 tan theta 2 minus theta 1. এইটাକୁ যদি ଆମେ expand କରିବା ତାହେଲେ tan ଏମିତି ଆମେ କରିଥିବୁ tan a minus b tan a minus tan b upon 1 plus tan b. ସେଇଟାକୁ ଆମେ just expand କରିକି ଲେଖିଥିଲୁ. Very easy. ଯଦି trigonometry ଆସୁଥିବ ମନେ ଥିବ ଫର୍ମୁଲା ତାହେଲେ this is very easy to remember. hello. Next ଆମ ପାଖରେ ଏଟା ଖାଲି acute angle ବାହାର କରେ. obtuse ବାହାର କଲେ pi minus theta is equals to phi. ହେଲା. Then କିଛି notes ଅଛି. If m1 is equals to m2 इतार slope equal ଅଛି ତାହେଲେ हमको जाना पड़ेगा कि जीटा लाइन कोइंसिडेंट ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର କେବେ ବି इंटरसेक्शन ହେଇପାରିବ. इंटरसेक्शन ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି. ଯଦି parallel ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ intersection is not possible. Okay, then if they are perpendicular, this is very important. ଯଦି ସେମାନେ perpendicular ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ m1 m2 ର multiplication will be equal to minus 1. ହେଲା. m1 m2 will be equal to minus 1. m1 sorry m1 m2 will be equal to minus 1. Okay, then this will show that the lines are perpendicular to each other. चलो एक क्वेश्चन करियो जोटा कि JEE-Main रे पचरा आइतला previous year. If the angle between two lines is pi by 4, angle दे दीजिए two lines, then the slope of one of the lines is half. Okay, find the slope of the other. Since we know that tan theta is equals to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ହେଲା. ଯଦି ଏଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା
tan theta tan pi by 4 is equals to 1. So 1 is equals to m2 हमको बाहर करना है m2 minus 1 by 2 upon 1 plus m2 by 2 हम एटा करदवा और लास्ट है m रो theta value value ओके 3 और minus 3 hello since this will be plus minus okay କାହିଁକି ନା mod ଅଛି ଦେଖ ଏଠି mod ଅଛି ओके କାହିଁକି ନା ଲାଇନ ଦେଖ ଲାଇନ ଏମିତି ବି ଯାଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି just ଆର perpendicular ସେ ତଥାପି ସେ ସେମ୍ theta ଏଠି ଗୋଟେ angle will be same okay so next हो ଯିବା special points on triangle very important बहुत क्वेश्चन आसे एटा कि हमको जଣା ଥିବା ଦରକାର triangle ର बहुत स्पेशल पॉइंट्स in the center or the center है in center x center ताले हमको केमती बाहर करिवार अछि से स्पेशल पॉइंट गुडा हमको जଣା ଥିବା दरकार तो फर्स्ट हम पढिबा व्हाट इज सेंटर सेंटर होची सेंटर होची when we take the mid points यार मिड पॉइंट ले लो a b रो मिड पॉइंट e then c आउ a रो मिड पॉइंट ले लो f then यार मिड पॉइंट ले लो हमें यार मिड पॉइंट ले लो d so let the vertices of triangle abc will be x1 y1 x2 y2 x3 x1 y1 x2 y2 x. The midpoint d of bc is this okay midpoint d of bc is this g the central divides ad internally in the ratio 2:1 ad को divide करे g is 2:1 so this is known as centroid in other words ये दिटार समस्त मिड पॉइंट गोटे लाइन जीव टू द वर्टिसेस सेटा लाइन जोटी इंटरसेक्ट करबो दैट इज सेंटर सेंटर को बाहर करिया पे गोटे वेरी सिंपल फार्मूला अछि ओके द फार्मूला इज just add every coordinate x coordinate add करो and y coordinate add करो तो divide by t that's all सेंटर को हमें g बोली अगर हमें पढ़िबा o g c हला o g c कौन एटा o कौन g तो हमें पढ़लु सेंट्रॉइड then what is c से गोटे हमर प्रॉपर्टी कि गोटे पर्टिकुलर रेशियो रे ओजीसी डिवाइड ओके सो नेक्स्ट हमें पढ़िबा इनसेट ओके व्हाट इज एन इनसेट सो इनसेंटर कोन इनसेंटर होची जदी एंगल बाइसेक्टर बाहर कर बी गोटे एंगल रे ए गोटे एंगल रे बसिट तार जदी एंगल बाइसेक्टर आरंभ करिब माने सो सेटा सब एंगल बाइसेक्टर जोटी मिसिबो that will be the inside okay so let a b c will be the vertices of the triangle let ad bisect the angle bac and cut bc at d ad ad bisects the angle bac and cuts bc at d we know that bd by dc is equals to a by ac is equals to c by d okay so a to be good asila a to be good asla how it intersect this intersection point is known as intersector देखो सेंटर एटा कोन एज बाइसेक्टर तमरो मीट कनेक्ट सेंटर देन एंगल बाइसेक्टर मीट कले इंसेक्टर ओके तो इंसेक्टर भी गोटे फार्मूला अछि को जस्ट फार्मूला माने रखिया अछि व्हाट इज द फार्मूला ना फार्मूला माने रखिया व्हिच इज x is equals to ax1 bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c where a is the length of the line segment opposite to vertices a this is b and this is c third asana theta asana right this is represented by I
This is represented by G. Next हम जो X center. X center कौन? X center होची. देखो, हमें कौन करिया? हमें extend करिया. से AB, AC और BC को लाइन को extend करिया. Extend करिया तले गोटे. इम्ती हमारा body की बड़ा एक क्यूब बनेगा. देखो, highlighter. हमें extend कर ले. तले इम्ती body क्या असला सब बढ़ना. Then ये BC को touch करी what a circle बनेगा, where BC is the tangent to the circle and also the AC and AB. Both all the three lines are tangent to this circle. All the three lines are tangent to this circle. All the three lines are तीनटा circle बनेगा, which are tangent to all the three lines. Okay. Then they will be having subcenter. So these centers are known as the X center with respect to this. I1 is X center with respect to the vertex A. I2 is X center with respect to vertex C or AB. This is BC. Okay, this is AC. So तार opposite है जो हमारा X center. देखो B रा opposite जो टच है I2 with respect to B. X center with respect to X center बाहर करियो तो फॉर्मूला है चावा. I1 यदि बाहर करियो, जार opposite बाहर करछो, सेटा को माइनस नहीं. That's all. In center formula मने अछि जार opposite बाहर करछो, A रा opposite बाहर करछो ताले small a को माइनस नहीं. B रा opposite बाहर करछो small b को माइनस नहीं. C रा opposite बाहर करछो small c को माइनस नहीं. That's all. Very easy. यदि in center formula मने अछि त X center formula आराम से मने रही जीवा. Okay, so अभी मार्क कर दो. This all just ट्रिक जदि आपको मने लगला कि जहां हम opposite बाहर करछो ताको माइनस नहीं. माइनस opposite will be minus. Hello. Then we have circumcenter. Circumcenter we denote circumcenter as circumcenter mostly denote as C. And orthocenter is O. Okay. Don't worry. Hello. So the point of intersection of perpendicular bisector of the sides. Okay. देखो सेट कर दिला सेंट्रोइड दिला जस्ट हमको बाइसेक्टर पॉइंट दरकार. पॉइंट को हमें वर्टेक्स से जॉइन कर दें. अब तीनटा वर्टेक्स जब जॉइन कर ले ओके पॉइंट मिलना. इथे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दरकार माने से लाइन को डिवाइड भी करथिबो और एंगल विथ द लाइन मानेबो 90 हला. से लाइन गुडा को जोड़ी बेसी हो से पॉइंट को हमें कहबो सर्कमसेंटर. For a right angle triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. This is very important. मेरे पास आ गया. ये तो right angle triangle. ताले A B रो लाइन को देखो. A B रो perpendicular line 90. B A रो लाइन perpendicular is AC. AC रो perpendicular line B. कि तो यार perpendicular line को. Perpendicular line in S. Okay. So this is a right angle circle. The circle बने तारे से center का और hypotenuse पर point करवा. यदि हमें फॉर्मूला टा लगाना, this is the formula. फॉर्मूला के लेंथी अच्छी, but हमें आराम से मने रख पाएगा. x1 यदि हमें भाग x1 मल्टीप्लाई करछु ताले sin 2a हला. x2 sin 2b, x3 sin 2c. तळे जते भी sin अछि sin 2a 2b 2c ऐड कर दो. very easy. लेवल sin अछि हला 2a 2b 2c. a से था x1 a से था x2 हला. then we come to orthocenter. Orthocenter कौन? It is the intersection of the altitudes of the triangle that can be obtained by solving the equation of two altitudes is known as ortho. Altitude, what is altitude? Altitude होची same point जो through की same point on the 80 altitude वाला altitude BC line अच्छी
आ वर्टेक्स अछि ए आपको सही पॉइंट दरकार जोटा कि ए आउ बीसी को जॉइन करबो इंटरस बाइसेक्ट करबो बीसी को बाइसेक्ट करबो थ्रू ए आउ एंगल बनेबो 90 डिग्री एटा करथिला एटा जस्ट बाइसेक्ट करियो इट जस्ट इंटरसेक्ट करबो नॉट बाइसेक्ट सॉरी इंटरसेक्ट बीसी थ्रू ए and makes 90 degree এটা করা BC को बाइसेक्ट करबो और ए रो किछि मतलब नहीं ए साइड हो जाओ ए पकड़ो जाओ कि ए टच करो इक्विलेटरल एंगल रे एटा टच करबो अच्छा और किछ नहीं सो ऑर्थो सेंटर रे कोन अछि जते हम एटे साइड टू ए नै तले ऑर्थो सेंटर रे tan tan भी tan अछि apa tan भी tan a plus tan b plus tan c so right angle triangle ortho center is the point where the right angle is formed and right angle triangle this is the ortho center this is what this is circumcenter and then bisector line join kariba taपर जे आसीबो central will be on inside always okay so in an equilateral triangle the centroid in center ortho center circumcenter all coincide ortho center देखो एटा होची OGC very important question बहुत पचारते OGC उत्तर है कि ऑर्थो सेंटर दे देबे है सेंट्रॉइड दे देबे आउ पचारिबे find the circumcenter how will you find so so O हम काउंट करते O G C ହେଲା ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ଅଛି A point C A point O A point G so this will divide in the ratio 2:1 thus G will divide which is central will divide the line joining orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1 all should lie in all always should lie in the same line okay so here is the proof of OGC mainly proof but still okay very easy proof nothing to worry about then in an isosceles triangle centered orthocenter in center circumcenter or lie at the same line এটা কোন OGC লাইন সেম লাইনে করা এটি দেখো isosceles রে খালি ওটা in center भी extra আছে which is also lie in the same line and the most of the triangle is same but all triangles with same line में OGC will be of the same line only will be only okay एटा हमको पांच छटा जड़ा पड़ला special points of a triangle what are the five special points of triangle जड़ा पड़ला so next one illustration let G be the centroid of the triangle ABC okay G which is centroid of triangle ABC prove that AB square plus BC square plus CA square is equals to 3 GA square plus GB square plus GC square देखो अगर मैं distance formula लगा we know centroid is what the line joining the line intersection of lines which joins the vertex and the bisector point of the opposite line or edge of the triangle distance formula of points can be used to prove AB square plus BC square plus A जो ऊपर दिया है is equals to 3GA okay centroid is G which is A plus H by 3 and K by 3 H is here any arbitrary point or a parameter H is known as parameter K is also parameter okay say assume करा C at A comma 0 তাহলে centroid আমার কোন হলো centroid একটু বাই তাই কিনা B আবার 0 comma 0 ହେଲା C A comma 0 ଆଉ A will be somewhere H comma K LHS move कला LHS रे कोन वाला से centroid रो distance पकला distance formula रे अब distance formula और बाहर करो then RHS कला RHS रे distance formula बाहर करो same distance formula कला both equal as well so this will prove that the above equation satisfies and
Approved. Then we have area of a triangle. What is an area of a triangle? Okay. Area of a triangle केमती बाहर करूँगी? Area of a triangle. Area of a triangle हमें determinant पढ़ी थी, हम easily बात कर पाएंगे. देखो, area of a triangle is nothing but determinant. Determinant. तीनटा पॉइंट दिया थी वजह ट्रायंगल अछि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 रो मल्टीप्लाई करिबो हाफ रो. This is what our area of triangle comes half L length into height. So length into height is given coordinate system as this. Written should be equal to area of triangle. Hello. So this is the equation. Okay, area of a triangle, which is given as this. Write the H. This. Both easy. Kitchen 1 by 2 multiplied by determinant x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. Determinant solve कर area of triangle. Hello. Then very interesting result we can get from the area of triangle is देखो यदि तीनटा पॉइंट दिया है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट तीनटा यदि कोलिनियर अछि ताले एरिया कोन हबो एरिया विल बी इक्वल टू 0 यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल रो फार्मूला रे तीनटा पॉइंट दिया है तो प्रूफ करबे छी आर दे कोलिनियर और नॉट यदि सेटा कोलिनियर अछि ताले एरिया 0 आसे कोलिनियर नाही ताले एरिया किछि वैल्यू निश्चय ही देबो सेटा एटा लेखा देखो. If area of a triangle formed by the point x1, y1, x2, y2, x3, y3 is 0, then the points all lie on straight line. Using this, we can determine whether these 3 points are in a straight line or are collinear or not. The condition for this is another condition of collinearity. Okay, collinearity outer condition. First condition हमें कौन लिखते हैं? First condition was collinear. Intercept collinear triangle. Yes. First condition, this is just an extension of एक जीरो रे यदि हाफ मल्टीप्लाई भी कर देला ताले कोन आला ताले भी जीरो आला ताले भी जीरो रहला बुझपारला. So this is just an extension of the first condition that we studied earlier. For example, the area of a triangle found by points 1, 4, 3, minus 2, minus 3, 16 is half determinant alpha is equal to 0. This will state that the points are in a straight line or the points are collinear with each other. Then very important formula, length of a perpendicular. देखो एटा कोन की हमको गोटे पॉइंट दिया है हां गोटे लाइन रो इक्वेशन दिया है हमको पछारिबे what is the distance of that point with respect to the line. Okay, हमको पछारिबे point of the line भितर distance बाहर करो ताले shortest distance mostly एक सब क्वेश्चन है shortest distance पछारे distance एटा यदि लाइन अछि एटा से पॉइंट अछि distance केमति बाहर करियो perpendicular draw करियो है this will be perpendicular. So this is also known as length of
perpendicular length of perpendicular. Hello. So length of perpendicular, the perpendicular distance P of a point P x1, y1 from the line ax plus by plus c or y is equal to mx plus c, anything it can give, is this is equal modulus of ax1 plus b y1 plus c. माने x1 और y1 रो वैल्यू पकड़ देला से लाइन नो इक्वेशन है हला डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So this is the equation of distance between a point and a line. So it is the IEG figure. This is the figure, and we have to remember this formula. Where is the formula? ऊपर टर मॉड लगेगा जो पॉइंट जायछि ताको से लाइन में प्रश्न पकड़बो जहाँ आंसर आसला ताको डिवाइड करबो जोटा लाइन में प्रश्न है a जोटा अछि माने x रो कोएफिशिएंट रो होल स्क्वायर प्लस y रो कोएफिशिएंट रो होल स्क्वायर रो अंडर रूट. दैट्स ऑल. कौन देले हमारा आंसर वैल्यू व्हिच इज द डिस्टेंस. बड़ा क्वेश्चन करिया. A rectangle PQRS has its side PQ parallel to the line y is equals to mx and the vertices PQRS lies on the line x, y is equals to a, x is equals to b and x is equals to minus b respectively. Find the locus of the vertex of this rectangle. Rectangular locus कौन है आपको बाहर कर एटा केमती करिया एटा हम करिया दुईटा साइड बनावा PQ और QR that must be perpendicular to each other. This is PQ and this is QR. This will be perpendicular. This is PQ, this is Q and okay. Therefore, the product of the slope will be minus 1. मैं देखते हैं slope m1 multiplied by m2 is equals to minus 1 when there are perpendicular. Let put an arbitrary parameter point value h comma k. Hello. This is arbitrary point. Are the locus and then S and Q have coordinates minus b comma beta and b comma alpha respectively, as t is the midpoint of SQ and SP. Put a point name R. This is R. Okay. So locus of point R is this. S and Q. S गोटे अच्छी ऊपर है R ऊपर गोटे S अच्छी S S रो भी हमें गोटे अल्फा रे गली एटी रे गली बीटा हला B comma beta and B comma beta and B comma alpha. Hello. S of Q and equal coordinates and T is the midpoint of SQ and PR. SQ of PR now midpoint is T. Okay. Thus P has coordinates minus h comma a and eta has the coordinates are then alpha is equal to a b plus h minus 1 by m is the slope of QR. Sorry, see how it goes now. So चलो just perpendicular हमें क्या ड्रॉ कर ले perpendicular slope मल्टीप्लाई करो ताले माइनस 1 आसी ताले माइनस 1 by m आसी गला हैला देन अल्फा का इक्वेशन बाहर आला हमें पकड़ देला एटा को डिवाइड कर देला this equal to this ताले हमारा locus of r बाहर दियो locus of r वाले ने हमको साइड बाहर करना है vertex r locus so this will be equation of the locus of r जोटा कि हमको रेक्टेंगल मिल पाला. So straight line में हमको खाली इक्वेशन को आपको मान रखना है how formula very simple in the straight line just हमको तीन तरह से सही टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिससे फॉर्मूला रिलेटेड हमको कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा. अब सिंपल कॉन्सेप्ट जोड़ा था
जोड़ा नोट रे लिखा है नोट मार्क करके से सब आपको मन रखा पड़ो कहीं से सब ऊपर क्वेश्चन आसी जेठी आसीगला परपेंडिकुलर जान नथिबो ताले सॉल्व कर परिबोनी हैला सेमिति छोटा छोटा जिनस कोलिनियरिटी कोन था से सब हमको देखिया को पड़ो हां कोलिनियरिटी माने slope of all a line AB, BC और AC का slope बाहर करना this is also a type of find collinearity मतलब ସବୁଠୁ best था कि ଆମେ determinant बनेगा सेटा जो 0 है ना collinear है जल्दी से पहचान देला हमको लाइन दे देला AB AC और AB AC और BC तीनटा लाइन दे देला कहला this collinear line फिर केमती करबो तार स्लोप बाहर करबो स्लोप यदि समस्त इक्वल आसेला तो they are collinear हैला this is how you do it this is another method to find whether the points on the lines are collinear to each other. हमें देख ले छोटा प्रकार equation of line that is point slope form, 2 point form, slope intercept form, normal form और parametric. Then we देख ले slope कौन था angle between two lines हमें देख ले very easy formula m2 minus m1 upon m1 plus m2 sorry m1 m2 plus 1 from whole one. Then it is important point taken on the triangle centered in center, circumcenter, excenter, or the center. तापर आपको पढ़ ले OGC, OGC, where G divides O and C in the ratio 2:1. Equation solve कर ले area of triangle देख ले area of triangle वाला जब आपको पढ़ला collinear पे हमें थोड़ा थोड़ा condition बाहर कर ले which is area is equal to 0 then the points are equal. Length of perpendicular बाहर कर ले what is the length of perpendicular यदि गोटे पॉइंट दिया है बी तार से पॉइंट को लाइन में पकड़ देबा तार बॉन्ड में तले कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर पकड़ देन हम लोग क्वेश्चन देख ले आओ अपन चैप्टर वेरी इजी चैप्टर जस्ट फार्मूला बना रखा है ओके सॉल्व करियो अछि हमको देखिए तो अच्छा सो एटा को हमको प्रैक्टिस करथिबार अछि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस रेगुलरली एटा फार्मूला हमें रखिया है प्रैक्टिस करना क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन लगा हाउ केमती सॉल्व करते सब देखा है ना एग्जांपल लगा यहाँ पे एनसीईआरटी रे जति के क्वेश्चन अछि सब कर लगा आउ यदि किसी डाउट हो ताले सॉल्यूशन माने खोल के देखिए है ना ताले वेरी इजी चैप्टर ई चैप्टर जति क्लियर है ना ताले अगर कोन सेक्शन जोटा यहाँ पे रिवाइज करला बेले यदि सर्कल पैराबोला एलिप्स सोरे आउरी इजीली हमें सॉल्व कर पारिबा क्वेश्चन है ना सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम कीप प्रैक्टिसिंग बाय बाय